Back to my channel. Today we'll be doing the very first chapter of class 12th political science ISC, which is forms of government. This is divided into 3 chapters. Today we'll be doing the first chapter, in which we'll be studying the meaning and nature of authoritarian state, totalitarian state and liberal democratic states. And in the next 2 chapters we'll study the meaning and features of parliamentary, presidential, unitary and federal forms of government. So before starting the series of political science, I want to tell you something, that this subject is not difficult at all. All you need is to have a proper understanding of it. So let's start the video. Today we'll be talking about different types of modern state. So it is divided into 3 states. One is totalitarian state, other one is authoritarian state, and the last one is liberal democratic state. So the first one is a totalitarian state. From the word you can easily guess the word total, and over here total means total control over the life of an individual. In these kind of state, there is a concept of total centralization of power in the hand of a top ruler. There's a one ruler who decides everything, and each and every part of an individual life is under the control of that ruler, and there's always a rule of ruler, not rule of law. Judiciary, it's just a joke to them, and the people who are living in these kind of state, they are not living, they are surviving. Their rights, freedom of speech and expression, freedom of press and different means of mass media, ये सब कुछ नहीं है. All you need to do is that obey the ruler. Whatever he say, you have to follow it. For example, Hitler did whatever he wished. उसे लोगों से कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं. उससे इस चीज़ को कोई फ़र्क नहीं था. उसे सिर्फ अपना देखना था, what he want to do, what he want to achieve, what are his wish. That's it. And लोग क्या करना चाहते हैं वो उसके लिए मैटर नहीं करता था. वट एवर द आइडियोलॉजी ऑफ द रूलर इज आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट. इन सिंपल वर्ड, इफ आई से, दिस इज अ मोनोलिथिक सोसाइटी where there is a one government, one ideology, one party, one leader and a one rule. And the rights of the people, it totally depends upon the wish of the rulers. And इन्हें सिर्फ वही राइट्स दी जाती हैं जो इनके स्टेट के लिए अच्छी हो, और इन्हें बहुत ही लिमिटेड राइट्स ऑफ फ्रीडम दी जाती है, सो दैट पीपल डोंट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द रूलर. कि अगर वो गलत काम भी रूलर करे तो बिकॉज ऑफ द फियर कोई उनसे कुछ कहे ना, वो उससे डरते रहे. सो टोटलिटेरियन स्टेट के एग्जाम्पल्स अगर है तो it is fascism in Italy, Nazism in Germany and communism in China. These are some example of totalitarian state. Next in the line is authoritarian state. It is quite similar to the totalitarian state. The only difference over here is that कि it provide limited and regulated openness. थोड़ा सा openness है, and over here there is not a rule of ruler. यहाँ पे rule है dictator का. And over here we have 3 parts of government, which is executive, legislature and judiciary. But executive is the most powerful one, and it dominates legislature and judiciary. Whatever the executive over here wants to do, वो करेंगे. वहाँ पे रूलर को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा था, बट ओवर हियर द पावर इज़ गिवन टू द एग्जेक्टिव. डिक्टेटरशिप यहाँ पे है. दैट्स व्हाई आई सेड दैट इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू टोटलिटेरियन स्टेट, बिकॉज यहाँ भी डिक्टेटरशिप है, वहाँ भी डिक्टेटरशिप ही थी. एंड लिमिटेड एंड रेगुलेटेड ओपननेस इज परमिटेड. थोड़ी सी फ्रीडम इनको, थोड़ा सा होता नहीं कि थोड़ा सा छूट दे दिया, वो है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसा समझ लो कि टोटलिटेरियन स्टेट से बचने के लिए इन्होंने अथॉरिटेरियन स्टेट बना दिया है. तो लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जो है ये अलाउ किया गया, बट इट इज़ यूज्ड टू कीप द पीपल एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड, कि कभी भी कोई दूसरी पार्टी पावर में ना आ पाए. सो इनका मेन जो मोटिव था इसके पीछे वो यही है. थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस जो राइट्स एंड फ्रीडम है लोगों को वो दे दी जाती है यहाँ पे. सोसाइटी इज केप्ट डिवाइडेड, वीक एंड अंडर कंट्रोल. एंड दीज काइंड ऑफ स्टेट्स कैन बी फाइंड इन सेवरल कंट्रीज इन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका. नेक्स्ट इन द लाइन इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट. अब डेमोक्रेटिक स्टेट हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग से इंडिया में सुना है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. So these people are elected by the people. they उनके representative हैं, they are answerable to these people. अगर कुछ भी गलत काम करता है कोई भी executive, कोई भी minister, so then they are responsible to the people who have elected them. next time वो क्या करेंगे, अपनी जो power है, वोट करने की power है, उसको यूज़ करके वो next time उनको वोट नहीं देंगे और उनको वो position नहीं मिलेगी. so it is a liberal democratic state. और जो representative government है, it is formed by the freely elected representatives of the people.
उन्हें elect करते, and the right to vote is available to all without any discrimination. कोई discrimination नहीं है, everyone have the right to vote. For example, in India, all the people of the 18 years or above 18 years are entitled to give votes. So एक वोटिंग सिस्टम है, लोग इलेक्ट कर सकते हैं, लोगों का जो ओपिनियन है वो मैटर करता है, और उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, सिविल लिबर्टीज़ इन लिबरल डेमोक्रेसी, जो लोगों की राइट्स है टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यूज़, दे हैव द राइट to freedom and speech and expressions, freedom of press and other means of mass media is also ensured to them. तो उन्हें ये सारी चीज़ें जो है, for example in our country we these rights are mentioned in our fundamental rights also. अगर वायलेट होती है तो वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. सो दिस इज़ अ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट जहाँ पे लोग फ्रीली रह सकते हैं, अपने ओपिनियन को प्रेजेंट कर सकते हैं. देन we have limited government. Limited government over here means that the government exercises only those powers which are granted to it by the constitution. Constitution ने जिसको जो पावर दे रखी है वो सिर्फ वही पावर होल्ड करेगा. एक्सेस ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर इज गोइंग टू डू द वर्क ऑफ जुडिशरी और एग्जेक्टिव. जो जिसका काम है वो वही करेगा. जुडिशरी परफॉर्म्स एन एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट रोल एज अ गार्जियन of the constitution and fundamental rights and freedom of the people. For example, India, UK and US. And if you found the video useful and all your concepts are clear, then do like, share and subscribe to my channel.